Okay. Now, actually, this particular part, combination of pulleys, is not there as a part of the syllabus, but still we would be covering this because here the combination means we would be taking one single fixed pulley and there will be multiple movable pulleys arranged in two manners. Okay. So first of all, let us understand, see this, when the load is to be shifted or moved from one place to another, we require a pulley of MA much more greater than the having an MA of greater than the value of MA as 2. Okay, so the discussion that we did previous till that was limited for a particular application where MA की value 2 है तो चल जाएगा काम, but then at certain places where we need to really lift very heavy loads like in cranes and maybe in huge ships, there are large ships which have those small boats connected to them, like maybe we can say emergency छोटे छोटे boats होते हैं connected. Whenever you all might have seen a big ship, when it travels from one place to another, it carries those small ships along with it. And then there are many applications industries में वगैरह आपने लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत बड़े बड़े जो लिफ्ट जो बहुत वजन उठाना पड़ता है, over there we need to have a pulleys which can have MA greater than 2. Okay, so for that these normal ones will not suffice, so we need to look into some that kind of pulleys wherein the MA can be greater than 2. So here there are two ways how the combination can be done. One is one fixed pulley and several movable pulley. So वो जो fixed वाला रहेगा, that will be definitely used to just change the direction of the effort in the downward direction, जो हमने already इसके पहले टॉपिक में कवर किया हुआ है. And then the second part is using several block and tackle system जो है with the which has a lower block movable and the upper block will be fixed. Of course, this particular part, that is the block and tackle system, will be covered on the board. But since this is a very simple part, I'm covering it in the PPT video only. So first of all, understand this diagram. So if you all can see over here, there are 1, 2 and 3. Okay, let me use the highlighter. Yeah, 1, 2 and 3. Yes, that is this and this. Okay, so these three pulleys are the movable pulleys. Okay, and overall from this it is connected to the pulley D. So pulley A, B and C, these three pulleys will be the movable ones, and जो D वाला है it will be used just to change the direction of the effort. Okay, तो अभी ये काम कैसे करेगा हम लोग जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं. See, in the previous video we have already seen how in a movable pulley, in a single movable pulley, how the load, that is this load, gets balanced by the two tensions. ये हम पहले ही देख चुके हैं. Okay, so now here if you all can see this in a similar way, like this particular load, the main load is balanced by two tensions. Can I say that this particular tension T1 will also be balanced by T2 and this T2? Okay, are you all there with me? Yes. See, I will repeat myself once again. ये load L जो है, जैसे it is balanced by these two strings, तो यहाँ पे T1 T1 बनता है. तो उसी तरह से अगर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो T1 है, this T1 will be balanced by this T2 and this T2 over here. Yes. So also, I'm sorry, also over here, if you all can see, this particular T2 will be similarly balanced by this T3 and this T3. So जैसे मैंने बोला था L will be 2 times T1, can I also say T1 will be equals to 2 times T2 and T2 will be equals to 2 times T3 over here. So see this, each movable pulley is attached to a separate string. So over here, can you all see A is connected to a separate string over here. Similarly, B is connected to a separate string and C is also connected to a separate string over here. Okay, let me rub all this. Okay, yeah, then if you all can see over here, so this I have already covered. The tension is same in one string but it is different in different. So here क्या हो जाएगा, T1, T2 and T3, but for every this thing, so this L gets balanced by 2 times T1, see this, then T1 becomes 2 times T2 and T2 becomes 2 times T3. Okay, and then what will be the use of this particular pulley?
सिर्फ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पे लोड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फाइनली ये ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, जो T3 है ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा T3, तो लेकिन मेरा काम डिफिकल्ट हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड अ सिंगल fixed pulley over here. So A, B and C, they are my movable pulleys and the D is a single fixed pulley. So जहां से मैं इसको इधर से नीचे खींचूंगा. So students please understand this. So जो effort रहेगा मेरा, effort will be only T3. Okay, and load will be what, 2 times T1. But if you substitute T1 की जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग, 2T2. Correct, but then again what is T2? T2 is nothing but 2 times T3. So see in next slide, if you all can see, can I say 2 into 2 into 2, तो ये क्या बन जाएगा, L is equal to 8 times T3. So 8 को अभी मैं कैसे लिखूंगा, 2 to the power 3 times T3. ओके, सो इसको मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, 2 to the power 3. सो ये 3 क्या है, द नंबर 3 also represents the number of movable pulleys. So you all might have seen in the previous diagram, we have how many movable pulleys? 3 movable pulleys we have. So from this I can say that N is nothing but my movable pulleys. Okay, I am really sorry, I'm not able to write it, okay, any which ways. So N is nothing but what, N is nothing but the number of movable pulleys. So from this, हाँ, and effort is equal, effort is nothing but T3, ये हम already देख चुके हैं. So let us see what is the mechanical advantage, that is nothing but load upon effort, 2 to the power 3 into T3 upon whole divided by 3T, whole divided by T3, sorry. So T3 gets cancelled, तो क्या बच गया, MA is nothing but 2 to the power N. Yes, so this is the very simple way in which we can find out the MA, which is nothing but 2 to the power N. So I'll repeat myself once again, dears, where N is nothing but the number of movable pulleys. Yeah. Then let's go to the velocity ratio. We all have seen this, as one end of the string moves a distance x, dl is equal to x. Then the string connected to the axle of the pulley comes up by a distance 2x. So similarly, pulley B भी कितने distance से move होगा, 2x. So pulley C also moves by distance 2 into 2x and D moves the distance by 2 into 2 square into x, जो हम पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं इसको. So see this, dear. So hence the effort moves by distance DE is 2 to the power cube into x, dl x है. तो मैंने बोला था वो एक अगर x हम खींचेंगे तो यहाँ पे every side से उतना distance चले जाता जाएगा, तो it is nothing but 2x. So over here velocity ratio का formula is dE upon dl, that is the displacement by the effort upon displacement by the load. So 2 cube into x upon x. So again this xx gets cancelled and we get the formula as 2 to the power n. So it is similar to the VR, that is nothing but 2 to the power n, and here I will repeat again, n is nothing but number of movable pulleys. So efficiency is MA upon VR, 2 to the power n upon n is 1 or 100%. So of course this is nothing but this is possible only in an ideal condition. So here with the note we will end our discussion. In actual practice, both the weight of the pulley and the string of the friction between the bearings of the pulley reduces the MA. Definitely क्या होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा ही, पुली का जो वेट होगा, फिर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग की वजह से फ्रिक्शन उधर होगा. तो ये तो हमने एक्चुअल कंडीशन वाला देखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रहेगा, जिसके कारण अपना MA का वैल्यू विल रिड्यूस and we may not get the efficiency as 100%. So I hope you all understood this very simple discussion, although it is not there as a part of our scope, but still I thought I will cover it in this PPT discussion, and in the next upcoming part we will be seeing the block and tackle system. I hope you all understood the discussion. Thank you. Hi students, let's begin with the block and tackle system, very important from the exam point of view. Now when we say block and tackle system, here this set of pulleys, okay, the upper part and the lower part, okay, that particular one, these set of pulleys will be called as block, and the word tackle means these set of strings that are there, okay. So now let us understand this. Upper block will be connected to the rigid support. Now these two, as I already mentioned, जैसे मैंने पहले बोला था कि ये दो पुलिस को मिला के ये एक ब्लॉक बनता है. तो ये हो गया ऊपर का ब्लॉक and this is the lower block over here. The upper block will be connected to the rigid support. Okay, rigid support मतलब जो एक strong support होगा उसको ये connect होगा, and the lower block that is there,
वी आर कनेक्टिंग द लोड, विच एवर जो भी लोड हमें मूव करना है वो यहां पे लोअर ब्लॉक को कनेक्ट किया रहेगा. Then here let us understand about the number of movable pulleys. Okay, so here the number of movable pulleys yahan pe in the lower block, okay, will be always equal to or less than 1. Iska matlab kya hai? Let us understand this. Now here in the diagram, how many pulleys we can see? We can see 4 pulleys. Okay, so since here this particular pulley is used to move the load, these 2 pulleys are going to play a very important role. Okay, so these 2 number of pulleys will be either equal to the number of pulleys in the upper block, okay, or less than whatever number of pulleys are there in the upper block. ये समझ में आया मैंने क्या बोला? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. ये जो नंबर ऑफ पुलीज होंगे, जो भी होंगे, जैसे ये डायग्राम में 2 पुलीज है, ठीक है. सो हियर देयर आर 2 पुलीज इन द लोअर ब्लॉक. ओके, सो दीज 2 पुलीज विल बी आइदर इक्वल, जैसे ये डायग्राम में है, देयर आर 2 पुलीज अप, देयर आर 2 पुलीज डाउन. जो नेक्स्ट वाली डायग्राम हम देखेंगे वहां पे 3 पुलीज होंगी मेरे अपर ब्लॉक में, एंड उससे एक मेरा कम, दैट इज अगेन 2 पुलीज इन द लोअर ब्लॉक. ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो हियर द नंबर ऑफ पुलीज इन द लोअर ब्लॉक विल बी आइदर इक्वल टू जो ये डायग्राम में है, नहीं तो लेस देन 1. इज दिस क्लियर? सपोज ऊपर के ब्लॉक में देयर आर 3 पुलीज, देन द लोअर ब्लॉक विल ऑलवेज हैव 2 पुलीज. सो हमेशा वो इक्वल रहेगा, सॉरी, या तो इक्वल रहेगा या तो उससे एक नंबर कम रहेगा. देयर इज नो चेंज इन दिस. Everyone understood till here? Let's go ahead now by the number of pulleys in the fixed. Now इसका arrangement कैसा होता है, सिस्टम क्या है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं. So now for the pulleys that are there, for the pulleys which are equal in upper block and lower block, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. I'm repeating. For the number of pulleys which are equal in the upper block and the lower block, जहां पे दोनों भी number of pulleys equal होंगे, okay, तो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा. तो देखो ये स्ट्रिंग शुरू कहां से हो रहा है वो देख लो पहले. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर हुक, ऊपर वाले हुक से शुरू होगा, यहां से गया इधर, फिर इधर से गया इधर नीचे, एंड यहां से इधर हमने कनेक्ट किया. तो यहां पे मेरा एफर्ट है, जो एफर्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल करूंगा. तो एफर्ट में जैसे ही इसको पुल करता हूं, ये लोड मेरा ऊपर आ जाएगा. Is this clear to you all? Yes. तो यहां पे ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ये पुलीज हो गए मेरे 4, एंड एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है वो ऊपर वाले हुक में. अभी ये देखो, मैं आई एम स्ट्रेसिंग इट ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर बिकॉज when we have the next diagram, that is the next pulley, wherein we have 3 pulleys in the upper part, okay, the जो string है ना ये अपना, ये कहां आएगा पता है? It will come in the lower block. ओके, अच्छा, उसको ऐसे कुछ याद रखने की वगैरह कुछ जरूरत नहीं है. यू नो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, देखो हम लोग एफर्ट से स्टार्ट करेंगे, यहां से गए ऊपर वाला, एक ऊपर वाला, फिर एक नीचे वाला. वी कम हियर, देन वी कम हियर, एंड वी कम हियर, एंड कैन यू सी इट इज ऑन इट्स ओन, इट इज कमिंग इन द अपर ब्लॉक और द अपर हुक, आई विल से. सॉरी, सबको ये समझ में आ रहा है? सिंपल है बहुत ही. Yes, वो अगला वाला डायग्राम उसको भी हम समझेंगे, बट नॉट नाउ, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. एंड एवरीवन अंडरस्टूड दिस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये एग्जाम में पूछा जाता है. तो क्या याद रखना है हमें? पहली बात, इन दोनों का डायामीटर आप लोग सेम नहीं रखोगे. ओके, इसका डायमीटर जो भी रहेगा उससे ये थोड़ा कम छोटा बनाना पड़ेगा. सिमिलरली इधर भी वैसा. मे बी ये दोनों यू कैन कीप इट सेम, ये दोनों यू कैन कीप इट सेम, बट इन दोनों को सेम मत रखना, थोड़ा कम रखना, छोटा सा रखना. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो स्ट्रिंग्स मैंने बनाए हैं, ओके, कैन यू ऑल सी, एकदम ये ऐसे टाइट है. ओके, कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी लगा थोड़ा सा ये है तो वो मेरे गलती से हो गया रहेगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स ड्रॉइंग दीज पुलीज लाइक दिस. ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो कंप्लीट 0 मिलेगा आप लोगों को. यस, बिकॉज देखो ये जो स्ट्रिंग्स है ये क्या है, दैट इज नॉट एट ऑल टाइट.
ओके तो इफ द स्ट्रिंग्स विल नॉट बी टाइट वो लोड उठा पाएगा? नेवर. यस. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे there will be tension in all the tension will be generated in all the 4 strings. Okay, 4 or 1, yes, no 5 strings, 1 2 3 4 5. यहां पे भी एक स्ट्रिंग है, शायद से ये ड्राइंग में थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो यहां पे सब जगह पे हमें ये टी वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड यहां पे ऊपर ये जो रिजिड सपोर्ट है उसको भी दिखाना है. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऊपर का हम बताना ही भूल जाते हैं. Yes, so please don't do this mistake. Okay, so while you are drawing, I'll repeat the rigid support, the diameters हम इन दोनों के सेम रखेंगे, इन दोनों का सेम रख सकते हो. एंड ये जो स्ट्रिंग्स आप बनाओगे, you all will use scales properly scale से बनाओ. आप लोग इधर से रखें, इधर से स्केल ऐसे एक लाइन बना दो, फिर इधर से ऐसे एंड लाइक दैट. Okay, so it's very simple to understand this. Okay. So let's continue with the MA and VR in the next part.